हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी आईआईटी जैम और गेट की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार आते हैं आईआईटी जैम और गेट के पेपर में। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन आता है आईआईटी जैम और गेट के पेपर में। सो देखिए पहला सवाल। इन गेट 2024 क्वेश्चन नंबर 53, यू वर आस्क्ड टू फाइंड आउट और टू चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए टू वेरिएबल फंक्शन. Now, maxima and minima of a two variable function is very interesting. It is similar to maxima and minima of a one variable function. Now, two variable maxima minima is very common in IIT JAM and GATE. Okay, so let us see how to proceed with these questions. For the functions f from R2 to R specified as fxy equals to x cube minus y cube plus 9xy, which of the following options are correct? That means more than one option can be correct. All right. Now, जिस तरीके से वन वेरिएबल केस में, जैसे सपोज आपके पास फंक्शन है, वन वेरिएबल केस में व्हाट वाज द नेसेसरी कंडीशन? द नेसेसरी कंडीशन वाज दैट d by dx of fx was supposed to be 0. Okay, that was the necessary condition. Or we can say df was 0 because df is nothing but df by dx into dx. That was 0 in one variable case. Now, as a parallel case in 2D, what should be our necessary condition? So in here my function is of two variables, so my df can be written now down as del f by del x into dx plus del f by del y into dy. Now this is my df, the derivative or differential of f, because I have a differential of two variables. So I'll be calculating partial derivative with respect to x, that is fx, and then partial derivative with respect to y, and this is my formula for df. So as a corollary to case 1 in one dimensional cases, in case 2 it becomes the necessary condition is df is equal to 0. That is only possible if fx is equal to 0 and fy is equal to 0. So what is the necessary condition to calculate maxima and minima in the case for two dimension? Partial derivative with respect to x and partial derivative with respect to y should be equal to 0. I hope this much is clear. Okay, so let us calculate partial derivative with respect to x, which is 3x square plus 9y, and partial derivative with respect to y, which is minus 3y square plus 9x. Okay, fx equals to 0, fy equals to 0, necessary condition for maxima minima. So that means 3x square plus 9y equals to 0 minus 3y square plus 9x equals to 0. From here, 3y square is equal to 9x, so y square is equal to 3x. Okay, so look at the first equation. 3x square plus 9y is equal to 0. So in place of 3x, we can put y square, or you can put x is equal to y square by 3. So 3 and x is equal to y square by 3. So y square by 3 whole square plus 9y is equal to 0. So we have 3y4 upon 9 plus 9y is equal to 0. Okay, so we have y4 plus 27y is equal to 0. So y cube plus 27 is equal to 0. So y is equal to 0, or y cube is equal to minus 27. That is y is equal to minus 3. So y is equal to 0 would means 0 square is equal to 3x, x is equal to 0. And y is equal to minus 3 would means minus 3 square is equal to 3x, means x is equal to 3. So I have two critical points now. Point number 1 is 0, 0. And point number 2 is 3 comma minus 3. So these are the two candidates where I am going to find out my maxima and minima. Okay, now let us pay attention to what I will do next. Now, अब आपको क्या करना है? आपको तीन क्वांटिटीज निकालनी है. पहली क्वांटिटी है a, fxx. That means you are going to partially differentiate f twice. Okay, b fxy and c fyy. Okay, so what is your fxx? 6x. What is your fxy? Differentiate fx with respect to y, which is your 9. Okay, what is your fyy? Minus 6y. Okay, then you have to find d is equal to ac minus b square. This is your discriminant. Okay, remember this. So d is equal to minus 36xy minus b square. Okay, so which is minus 81. Okay, now please remember this classification. If d is negative, we will have a saddle point. Okay, if d is positive, if a is negative, we will have a maxima, and if a is positive, we will have a minima. That is what you have to remember. These are basically bordered Hessian. But in two case 2 by 2 matrices, there is no need to remember such high-fi term bordered Hessian. Just go with the discriminant theory and you will understand. Okay, so now let us check at these 2 points what is happening. Okay, so point number 0, 0. Your d is minus 36 into 0 minus 81, which is negative. So we have one saddle point at 0, 0. Okay, now let us see what happens at 3 comma minus 3, my next point. So at 3 comma minus 3, that is q, 3 minus 3, your d is going to be minus 36 into 3 into minus 3 minus 81.
So it is 36 times 9 minus 81. So let's take 81 common, and you will have 4 minus 1. This is positive. So your D is positive. That means you have a chance of either getting a maxima or a minimum. Now let us look at A. Your A was 6x. My x is 3, which is 6 times 3 is 18, which is positive. So I have one strict local minimum. Okay. So we have a minimum value and we have a saddle point. Option number A and option number B are the correct option for this question. So a two variable function has a very high chance of occurring in IIT JAM or IIT GATE exam, and this is how you deal with it. Necessary condition, put the partial derivatives equals to 0 and then calculate the sign of A एंड डी टू चेक फॉर सैडल पॉइंट और मैक्स और मिनिमम. सो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस टाइप के और सवाल करके जाने चाहिए एग्जाम से पहले. अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस चाहिए, प्लीज ज्वाइन आवर चैनल एड्यूश्योर और यू कैन कम टू आवर कोर्स, क्रैश कोर्स. वी हैव अ वंडरफुल क्यूरेटेड कोर्स फॉर आईआईटी जैम एंड गेट प्रिपरेशन. डू जॉइन अस. ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और या अगला सवाल हमारे पिटारे में क्या है. सो इट इज आईआईटी गेट 2025 क्वेश्चन नंबर 63. fxy is minus x square minus y square plus 2x plus 4y plus 5. Let x star y star denote the solution to the following optimization problem. Maximize fxy subject to x greater than or equal to 0, 2x plus y less than or equal to 6. तो ये बेसिकली एक नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है. नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसका मुझे मैक्सिमा मिनिमा निकालना है वो लीनियर नहीं है. लीनियर का मतलब होता है x और y की डिग्री 1 होती है. यहाँ पर x और y की डिग्री 2 है. ओके, तो हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो अब हमें इसे ऑब्जर्व करना है और हमारे कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि हमारा जो x है और y है वो 0 या उससे बड़ा होना चाहिए और 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए. इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो पहले तो अपने फंक्शन को देखते हैं कैसा है. तो जो मेरा फंक्शन है वो है क्वाड्रेटिक माइनस एक्स स्क्वायर. तो मैं क्या करती हूँ, एक्स एक्स वाली सारी टर्म्स एक साथ लिख देती हूँ. ओके, अभी देखिए हम क्या करेंगे. ओके, फिर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर में से नेगेटिव साइन बाहर लेते हैं, स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं. सो मैं +1 -1 कर देती हूँ यहाँ पर. उससे मेरा एक्सप्रेशन खराब भी नहीं होगा. और यहाँ पे +4 -4 कर देते हैं. ठीक है, सो ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 एंड ये बन जाएगा माइनस y -2 का होल स्क्वायर -4 + 5. तो मेरा जो एक्सप्रेशन है एफ एक्स वाई वो बन गया माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस y -2 का होल स्क्वायर एंड +1 +4 +5 +10. तो अब आप चीज बहुत ध्यान से नोटिस करिए कि जो x -1 का होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और जो y -2 का होल स्क्वायर है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्योंकि वो स्क्वायर्स है. और अगर इन्हें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस x -1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये माइनस y -2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. यानी कि ये जो मेरी दो क्वांटिटी है जो स्क्वायर्स के अंदर है, ये जो कंट्रीब्यूशन दे रही है इनका कंट्रीब्यूशन या तो 0 है या लेस देन 0 है. तो यानी कि कुछ भी हो जाए मेरी मैक्सिमम वैल्यू 10 होने वाली है. ठीक है, क्योंकि अगर इसका कंट्रीब्यूशन 0 आया तो मेरी वैल्यू होगी 10 और अगर मेरा कंट्रीब्यूशन यहाँ से नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू घट जाएगी, वैल्यू 10 से कम हो जाएगी. तो यानी कि जो मैक्सिमा है एफ एक्स वाई का वो है 10 और कहां पर है, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 पर, ये दो पॉइंट्स पर है. ठीक है, अब देखो जो x इक्वल्स टू 1 है वो ग्रेटर देन 0 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड. जो y इक्वल्स टू 2 है ग्रेटर देन 0 है, वो भी सेटिस्फाइड. अब क्या 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है, ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि कंस्ट्रेंट है, उसको सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 2 इंटू वाई प्लस 2, ओके 2 इंटू 1 प्लस 2 इज 4 विच इज लेस देन 6, ट्रू. तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. यानी कि मेरा जो x स्टार y स्टार है वो बन गया 1,2. तो f x स्टार y स्टार मतलब f12 निकालना है. f12 यहाँ पे निकाल लीजिए. ओके, सो f12 is -0 square -0 square plus 10. So the answer is 10. So ये देखिए हमने ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड लिखने वाली प्रॉब्लम है, दिखने वाली प्रॉब्लम है, बट इसमें सिर्फ स्क्वायर में कन्वर्ट करके ऑब्जर्वेशन करना था. तो डरने की जरूरत नहीं है. लेकिन आप नोटिस करेंगे कि आईआईटी जैम और गेट में 2 वेरिएबल फंक्शंस आते हैं. 2 वेरिएबल फंक्शंस का मैक्सिमा मिनिमा आता है, चाहे वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैक्सिमा मिनिमा हो डेरिवेटिव्स की टर्म्स में या फिर एक नॉन लीनियर एलपीपी हो जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं. ठीक है, सो प्लीज डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिफोर गोइंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर फॉर यू. सो डोंट गेट सरप्राइज, प्रिपेयर इन एडवांस एंड प्लीज जॉइन आवर कोर्स, क्रैश कोर्स एट एड्यूश्योर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.